have to concentrate more on revision also, because then only, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, you will be not knowing anything blank sheet पे, and just revise also. जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनीथिंग, try to study and revise more and more, because if you revise na, then you will be able to recall them, otherwise it will be very tough वहाँ पे. And try to solve 20 years paper. तो 20 years का paper if you solve ना, you will get an idea the question किस कहाँ से आ रहा है. तो ये तो prelims है, but the most important part I have seen, prelims फिर भी हो जाता है, the most hurdle is mains. Mains बहुत बड़ा hurdle है, and for that you should know what is the actual thing the UPSC demands. देखो, UPSC thinks that you are an IAS officer, it thinks like that, और तुम्हारी कॉपी जो चेक होती है UPSC में, it is meant like you are an IAS officer and your answer should be like that, not like a student, but you have to behave like a student also. तो वही चीज़ है. तो पहले I'll tell you with mains. Mains में if you go through, I'll start with first paper, that is essay. Essay में क्या होता है? Essay is very risky, but these days marks is pretty high in essay. मेरे टाइम में क्या हुआ था, आई रिमेंबर कि वन ऐसे वॉज देयर ऑफ 250 मार्क्स. तो जब ऐसे लिखकर मैं आया तो आई वाज रियली कि मेरा पता नहीं क्या, मेरा जो रूममेट था उसने भी लिखा था, एंड ही केम लाइक मेरा बहुत अच्छा हुआ ऐसे, एंड आई रोट वेरी वेल, ही सेड. तो आई फेल्ट डिप्रेस्ड कि यार मेरा मतलब इतना बेकार हुआ है क्या, सीरियसली मतलब. तो आई कॉल्ड हिम ऑन दैट डे, आई रिमेंबर कॉलिंग मी, सर आई थिंक आई हैव रिटन दिस ऐसे, व्हाट डू यू सजेस्ट. तो ही मोटिवेटेड मी, ऑफ कोर्स, नो इट्स गुड एंड ऑल. And he said, I have written fantastic essay in this, that, and I was like, okay. And you know, when the result came, he didn't get through, and the marks, you can imagine, I got 130 marks. And I wrote a very simple essay. And that boy, that person got 10 marks. Now imagine. Now you can imagine the disparity, how it happens. So in essay also, what all things are required, I'll tell. Second paper, the first paper of GS is your history and geography. That is also very less. I think इस साल भी बहुत कम मार्क्स मिला है, 100. मेरे टाइम में नहीं गया था. That is also very less scoring. Now what is required in history and geography? I'll tell you. History and geography में क्या होता है? History, और first I'll deal with what is actually required. In 90s में क्या था? 90s में when some of the professors went to UPSC for evaluation, और जब उनका इंट्रैक्शन हुआ तो पता चला कि जो मार्किंग स्कीम होती है UPSC की, UPSC जो फैकल्टीज चेक करते हैं उन्हें बोला जाता है 1/3 मार्क्स यू हैव टू गिव फॉर कंटेंट, 1/3 यू हैव टू गिव फॉर कंक्लूजन एंड सिग्निफिकेंस, एंड 1/3 you have to give for contemporary examples which you have to quote. So if you write a very good answer with very good content, you will only get 1/3 marks. And now you can imagine that you have written very good answer with very good content, and you are getting just 2 marks out of 10. But if you have written very good conclusion, very good significance, very good examples of contemporary things happening, then you can get easily 7 to 8 marks. So this is the difference. UPSC is not going to check on your content, because you know, जब तुम district में जाओगे, this I have seen, डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो तुम्हारे कंटेंट से किसी को कोई मतलब नहीं है, बट यू नो इमीडिएटली एट द पॉइंट व्हाट यू आर गोइंग टू डिसाइड एंड व्हाई यू आर गोइंग टू दैट, तुम क्यों वो चीज़ लेने वाले हो फैसला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वेंट टू माई डिस्ट्रिक्ट पाटन, और वहाँ पे आ गया था बाढ़ में, फ्लड. तो फ्लड के टाइम में यू नो इमीडिएटली यू हैव टू टेक एक्शंस, इमीडिएटली यू हैव टू टेक स्टेप. देयर वाज अ राइट आल्सो, वो भी हुआ था. तो इमीडिएटली आई हैव विटनेस्ड ऑल दीज थिंग्स कि किस साइड से कैसे एक्शन लेना है. So that will be reflected in your answer also. So content उतना मतलब नहीं. If you forget also, it's okay. One more thing, in answer writing always try to attempt maximum question. छोड़ना मत question नहीं छोड़ना, क्योंकि इसका reason है, because they think कि यार तुम IAS होके जब पूरा पेपर complete नहीं कर पा रहे हो तो what will you do in your district work and all, because वहाँ पे it's very challenging. बट अब ये बोलना बहुत ईजी है, मत छोड़ना, बिकॉज ये भी होगा कि यू विल सी आउट ऑफ 100% यू विल ओनली नो 50% क्वेश्चन, रेस्ट 50% विल बी फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड, वो भी होता है.